Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Lecture in Biology Coaching Academy. Today we will discuss ETA model test full course medical test number 6. तो चलते हैं पहले MCQs की तरफ. पहले MCQ है हमारे पास. For the karyotyping of an organism, what one should require. अब karyotyping, पहले karyotyping जान लेते हैं. karyotyping क्या है? Karyotyping means to obtaining a photograph of the chromosome. किसी सेल के अंदर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जान लेना, उसका फोटोग्राफ हासिल करना karyotyping कहलाता है. तो इसके लिए हमें सेल फ्रैक्शनेशन मतलब सेल कल्चर भी करना पड़ता है, माइक्रोस्कोपी भी, स्टैनिंग भी. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, ऑल ऑफ दीज. For the karyotyping of an organism, one should require cell culture भी है, माइक्रोस्कोपिंग भी है और हमारे पास स्टैनिंग भी है. तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी अबंडेंटली फाउंड इन. अब नीचे ये चार ऑप्शन है, तो इसमें अगर आप लोग देख लें तो एड्रीनल ग्लैंड है. अब एड्रीनल ग्लैंड के जितनी भी हार्मोन्स है वो हमारे पास है स्टीराइड हार्मोन, स्टीराइड हार्मोन. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड सिंथेसिस करता है, कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है. तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कोलेस्ट्रॉल है वो असल में स्टीराइड हार्मोन बनाता है और स्टीराइड हार्मोन इसमें एड्रीनल ग्लैंड्स में ज़्यादा होते हैं. तो हमारे पास इसमें ऑप्शन क्या है? बी. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन बी अबंडेंटली फाउंड इन एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड के जो जितनी भी हार्मोन्स है स्टीराइड बाय नेचर है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है. इसके बाद है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, एक ऑर्गेनेली है हैविंग ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये एक एंजाइम है और कैटलेज. अब ऐसे सिंगल, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक ऑर्गेनेली है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है और इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम है और कैटलेज एंजाइम है. तो ये हमारे पास ग्लाइऑक्सीसोम है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. ग्लाइऑक्सीसोम हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनेली है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है और उन प्लांट सेल के अंदर जो जर्मिनेटिंग सीड्स उनके अंदर ये पाया जाता है जिसमें लिपिड्स ज़्यादा होते हैं और इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटलेज एंजाइम होते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स. अब एनिमल्स हमारे पास एनिमल्स अगर आ जाए तो इससे हमारा मुराद क्या होता है? वर्टेब्रेट्स मुराद होता है. इससे मुराद क्या चीज़ है? वर्टेब्रेट्स. अब वर्टेब्रेट्स में द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हमारे पास कोलेजन है. अगर ये एमसीक्यूज इस तरह आता कि द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट्स तो फिर रोबिस को ऑप्शन बी ठीक होता. लेकिन अब क्या है? द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, कोलेजन. नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं. विच टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन सक्रोज. अब सक्रोज देखो, सक्रोज बना होता है हमारे पास ग्लूकोज, इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है ग्लूकोज है और हमारे पास है फ्रक्टोज. ग्लूकोज चूंकि एल्डो शुगर है तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इसमें कार्बन 1 पे होता है और ये चूंकि कीटो शुगर है तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे होता है. तो इसमें जो लिंकेज है वो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 1,2. और ग्लूकोज इसमें हमारे पास अल्फा यूनिट होगा और ये हमारे पास में बीटा यूनिट होगा. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास अल्फा यूनिट पहले है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. 1 ग्लूकोज एल्डो शुगर है तो 1 वाला और ये फ्रक्टोज कीटो शुगर है तो सेकंड. तो 1 अल्फा 2 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये सक्रोज में मौजूद है. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ठीक है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रेन इन स्पर्म सेल. अगर स्पर्म सेल में देखें तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम में हमारे पास डीएनए और हिस्टोन से बना होता है डीएनए. तो इसमें हमारे पास 23 क्रोमोसोम है
तो इसमें 23 डीएनएस के साथ हिस्टोन्स मिलते हैं। अब 23 डीएनएस है तो डेफिनेटली डीएनए डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है, तो डीएनए हमारे पास डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो इससे 46 आता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या चीज़ है? 46। नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। Which of the following molecule bind with enzyme covalently? अब हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये एपो एंजाइम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, स्ट्रांगली ये कनेक्ट होता है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। एंजाइम विच हाइड्रोलाइजेज डाइसेकेराइड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब वही एमसीक्यूज है कि सक्रोज है जिसमें 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा 1,2 ये बनाता है ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। तो अब इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन बनाता है? तो ये इन्वर्टेज एंजाइम का फंक्शन ये है और ये सक्रेज एंजाइम का फंक्शन भी है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास शाबाश, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है डी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी। तो एंजाइम विच हाइड्रोलाइज डाइसेकेराइड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज इन्वर्टेज एज वेल एज सक्रेज, दोनों है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ह्यूमन कैन कॉज। अब इसमें हमारे पास इनफर्टिलिटी करेक्ट है, इनफर्टिलिटी। डेफिशिएंसी ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जिस तरह हम सबको मालूम है कोलेस्ट्रॉल क्या है? प्रीकर्सर है, स्टार्टर है, प्रीकर्सर ऑफ ऑल स्टीराइड हार्मोन्स। तमाम के तमाम जितने भी स्टीराइड हार्मोन्स हैं तो उसका जो स्टार्टर है, जो प्रीकर्सर है, वो कोलेस्ट्रॉल है। अब अगर कोलेस्ट्रॉल डेफिशिएंट है तो हमारे पास जो 6 हार्मोन है, मेल में टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, तो ये हमारे पास ये एस्ट्रोजन, ये टेस्टोस्टेरोन, ये स्टीराइड बाय नेचर है, स्टीराइड बाय नेचर है। तो अब ये स्टीराइड हार्मोन है। अब स्टीराइड हार्मोन बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से, अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो ये नहीं बनेंगे, तो इसमें हमारे पास इनफर्टिलिटी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 21 में ऑप्शन सी। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हैज 4 पायरोल रिंग्स और वाइल क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए में जस्ट कार्बन 7 पे डिफरेंस है। अब क्लोरोफिल ए में जो हेड है, क्लोरोफिल ए के हेड में और क्लोरोफिल बी के हेड में, क्लोरोफिल बी के हेड में, दोनों के हेड में कार्बन 7 पर, दोनों के हेड में कार्बन 7 पर क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर CHO ग्रुप है। तो सिर्फ कार्बन 7 इन हेड ऑफ द क्लोरोफिल में डिफरेंस है, तो बाकी और चीज़ों में डिफरेंस नहीं है। तो अगर क्लोरोफिल ए में 4 पायरोल है तो क्लोरोफिल बी में भी डेफिनेटली 4 पायरोल रिंग होगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। वायरल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब ऑप्शन देखो, प्रोटीएज, इंटीग्रेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो इसका मतलब ये ऑप्शन से हमें पता चलता है कि ये HIV एंजाइम का मतलब डिस्कशन है। तो इसमें प्रोटीएज करेक्ट ऑप्शन है जो वायरल प्रोटीन बनाता है। HIV का एक ऐसा एंजाइम जो कि वायरल स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाता है, दैट आर एक्चुअली वो हमारे पास क्या है? प्रोटीएजेस। ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट, तो जेनिटल हर्ज भी वायरल, बिल्कुल वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस बी भी वायरल इन्फेक्शन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ये भी वायरल। अब साइफिलिस अगर देखा जाए इसमें करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि एक्सेप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट, इसमें अगर देखा जाए साइफिलिस, तो साइफिलिस इज काज्ड बाय Trypanemma palladium which is a bacteria. It is caused by, it is a bacterial infection. ये हमारे पास क्या चीज़ है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है। अब इसको ज़रा दोबारा पढ़ लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक्सेप्ट साइफिलिस which is a bacterial infection. A bacteria infected by a patch had somehow developed to produce some amino acid
that was not in their genes before. अब अगर बैक्टीरिया, ये असल में जेनेटिक रिकम्बिनेशन की बात हो रहा है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। यहाँ पर स्टेटमेंट को अगर आप लोग एक दो दफ़ा पढ़ लें तो आपके जहन में जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया ये कंसेप्ट आएगा। और अगर ये कंसेप्ट आता है तो इसको दोबारा पढ़ लेने से, अ बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय फाज। अब जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया में वो प्रोसेस जिसमें बैक्टीरियोफाज इन्वॉल्व हो तो डेफिनेटली वो ट्रांसडक्शन है। उस बैक्टीरिया में वो जीन मौजूद नहीं है, लेकिन बैक्टीरियोफाज के जरिए पहले बैक्टीरिया से इसमें ट्रांसफर हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 31 में बी। A beaker is 20% filled with bacterial colony. How much time will be there for the bacteria to fill 80% of the beaker? अब ये हमारे पास एक बीकर है। अब बीकर में 20% बैक्टीरिया है, 20% बैक्टीरिया। तो जिस तरह आपको पता है कि मतलब बैक्टीरिया के लिए आइडियल रेप्लिकेशन टाइम क्या है, जिसमें जनरेशन डबलिंग होती है, वो 20 मिनट्स है। तो 20 मिनट्स में ये 20 से 40 बन जाएगा, ये 20 मिनट्स में, तो 40 से 80 बन जाएगा, 80% अगले 20 मिनट्स में। तो 20 मिनट्स और 20 मिनट्स को कंबाइन करके हमारे पास 40 मिनट्स आते हैं। तो इसको दोबारा ज़रा पढ़ लेते हैं। A beaker which is 20% filled with a bacterial colony, how much time will be 40 minutes will be required to convert the beaker containing 20% bacteria into a beaker containing 80% bacteria. तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। Plasmodium life stage found in both mosquito and human, तो ये तो स्पोरोजाइट हमारे पास एक ऐसा स्टेज है प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में, एपिकम्प्लिक्सान में जो प्लाज्मोडियम है उसकी लाइफ साइकिल में कि वो ये स्पोरोजाइट ह्यूमन की बॉडी में भी होते हैं और प्लाज्मोडियम के अंदर भी होते हैं। Fungal spores 34, fungal spores which germinate to produce senocytic hyphae. अब senocytic hyphae belongs to aseptate hyphae। ये क्या चीज़ है? aseptate hyphae। अब जिसमें aseptate hyphae होता है लो ग्रेड फंजाई कहलाते हैं और इसमें डायरेक्ट हमारे पास जाइगोमाइकोटा होगा। जाइगोमाइकोटा फंजाई का एक ऐसा डिवीजन है जिसमें लो ग्रेड फंजाई मतलब फंजाई, ऐसे फंजाई जिसमें एसेप्टेट मतलब सिनोसाइटिक हाइफी होते हैं। तो 34 में ऑप्शन ए करेक्ट है। गॉबलेट सेल्स आर स्कैटर्ड इन एपिथेलियल लाइन। गॉबलेट सेल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अब अगर आप लोग ट्रैकिया देख ले, नोज देख ले, ब्रोंकाई देख ले, तो उसमें गॉबलेट सेल मौजूद है जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। और गट अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देख ले तो उसमें भी, स्टमक वगैरह में भी, हमारे पास स्माइल इंटेस्टाइन में भी म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स, गॉबलेट सेल्स मौजूद है। गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स है, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स ये वहाँ पर भी ये मौजूद है। तो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। द नंबर ऑफ हार्मोन्स 42, द नंबर ऑफ हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अगर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की जाए, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, सो इसमें 5 टाइप्स सेल्स है जो कि 6 हार्मोन सीक्रेट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नाउन एज मास्टर ग्लैंड। तो ये 6 हार्मोन, तो द नंबर ऑफ हार्मोन सीक्रेटेड बाय इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज 6। 30 ग्राम of hemoglobin in blood can carry dash of oxygen at 100%। अब अगर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को अगर आप देख ले तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी 1.34 ml ऑक्सीजन है। ये इतना ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी OCC, अगर OCC की बात की जाए 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की तो वो इतना है। अगर OCC ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी
मतलब ये मैं 30 ग्राम, क्योंकि मुझसे मांग रहा है 30 ग्राम, तो अगर 30 ग्राम हीमोग्लोबिन को अगर आप लोग देख ले तो यहाँ भी हम 30 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और यहाँ भी 30 मल्टीप्लाई 1.34 ml ऑक्सीजन, तो इसमें आई थिंक हमारे पास कैलकुलेशन करने से 40.2 ml ऑक्सीजन आएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या चीज़ है? 40 cc डी। सॉरी, MCQs number 43, 30 gram of hemoglobin in the blood can carry about 40 cc, option B correct है। option B 40 cc of oxygen at 100% saturation rate and 100 of blood, हमारे पास ml blood है, 100 mm of Hg, इसका मतलब ये है 100, ये हमारे पास 100 ml ब्लड इससे मुराद है, 100 ml ब्लड इससे मुराद है, यहाँ पर ज़रा मिस्टेक हुआ है। तो MCQs नंबर 43 में करेक्ट ऑप्शन है बी 40 cc, और ये मैंने यहाँ पर प्रूव भी किया है। लार्जेस्ट कार्टिलेज इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन। अब लार्जेस्ट कार्टिलेज अगर आप बात करें तो हमारे पास ये लोग लेरिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और लेरिंग्स में हमारे पास 9 कार्टिलेज प्लेट्स हैं। लेरिंग्स में हमारे पास 9 कार्टिलेज प्लेट्स है लेरिंग्स में, और लेरिंग्स में 9 कार्टिलेज प्लेट में सबसे जो बड़ा लार्जेस्ट कार्टिलेज प्लेट है वो हमारे पास क्या चीज़ है? थायराइड कार्टिलेज प्लेट हमारे पास करेक्ट है। तो हमारे पास MCQs नंबर 44 में ऑप्शन सी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये अमोनिया भी, यूरिया, ये तमाम के तमाम प्रोड्यूस होते हैं। तो MCQ नंबर 51 में ऑप्शन डी करेक्ट है। इन proximal convoluted tubule of the nephron, which one of the following is not reabsorbed? तो वाटर चूंकि यूजफुल है, ये एब्जॉर्ब होता है, ये भी रीएब्जॉर्ब होता है। अब अगर प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो इसमें 125 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, और इसकी जो प्रोसेस होती है तो ये एब्जॉर्ब होता है, इसमें पूरे की पूरे रीनल ट्यूब्यूल्स में 124 ml ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब होता है। ये जो 1 ml एब्जॉर्ब नहीं होता, रीएब्जॉर्ब नहीं होता, तो ये असल में यूरिया होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है सी। इन proximal convoluted tubules of the nephron, which one of the following is not reabsorbed? जो रीएब्जॉर्ब नहीं होता तो वो है यूरिया। यूरिया नट रीएब्जॉर्ब्ड, नट रीएब्जॉर्ब्ड। ये 1 ml जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बाकी रहता है, जो रीएब्जॉर्ब नहीं होता, ये दैट एक्चुअली कंटेन यूरिया, जो कि बाद में यूरिन बनाता है। तो MCQ नंबर 52 में ऑप्शन सी करेक्ट है। The menstrual cycle in lactating females, mothers is inhibited by prolactin. अब प्रेगनेंसी के बाद प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन स्लोली एंड ग्रेजुअली ज़्यादा होती है, तो प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल इनहिबिट होता है। फिर जब फीमेल पार्चुरेशन होती है तो उसमें प्रोलैक्टिन और भी ज़्यादा होता है, तो उसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे पास इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन। तो ऑप्शन सी, menstrual cycle in lactating mother is inhibited by prolactin concentration, C correct है MCQ number 53 में। The number of hormones produced by posterior pituitary lobe, तो posterior pituitary lobe ये हमारे पास posterior जो pituitary gland है, posterior pituitary gland हमारे पास ए ग्लैंडुलर है। ए ग्लैंडुलर का मतलब इसमें ऐसे सेल्स नहीं है जो कि सिक्रीशन करते हैं, ग्लैंड का काम करते हैं, तो ये अपना कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता। हाँ, इसमें हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आते हैं, ADH और ऑक्सीटोसिन, जो इसमें स्टोर होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन को पैदा नहीं करता, बल्कि स्टोर करता है किस हार्मोन को? ADH को, ऑक्सीटोसिन को, जो कि हाइपोथैलेमस से आते हैं।
All are the constituent of soma. अब soma न्यूरॉन सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, तो उसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता, बाकी सब चीजें मौजूद है। वेलोसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स इन एक्सान डिपेंड, तो ये तो सिंपल बात है, डायमीटर, लेंथ और ये सब पे डिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी, वेलोसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स इन एक्सान डिपेंड्स अपॉन एमसीक्यूज नंबर 62 है और ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच प्रिवेंट डायूरेसिस प्रोड्यूस्ड इन, अभी मैंने इसका जिक्र किया इससे पहले वाले एमसीक्यूज में कि एडीएच जो हमारे पास है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस को बनाता है। एमसीक्यू नंबर 63 ऑप्शन ए करेक्ट है। ओरिएंटेशन बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू dispersed stimuli is known as kinesis. Dispersed stimuli means not defined, कहीं से भी आ सकते हैं, स्पीड चेंजिंग, टर्निंग मोमेंट, ये डिस्पर्स्ड स्टिमुलाई है। ऐसे स्टिमुलाई जो कि आपकी स्पीड में चेंज लाए, जो आपको टर्निंग पर मजबूर करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्स्ड स्टिमुलाई। डिस्पर्स्ड स्टिमुलाई हम उस स्टिमुलाई को कहते हैं जो चेंज लाए, चेंज इन स्पीड, जो स्पीड में चेंज लाए या जो पे आपको कंपेल करे, मजबूर करे, तो ये काइनेसिस है। एमसीक्यू नंबर 64 में ऑप्शन बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ये हमारे पास गोनोरिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, साइफिलिस भी है, हेपेटाइटिस बी भी है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ऑल आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एमसीक्यू नंबर 71 ऑप्शन डी इज करेक्ट। Any physical or chemical changes, any physical or chemical agent which causes defect in developing embryo, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? इसको टेराटोजेंस कहते हैं। टेराटोजेंस हमारे पास म्यूटाजेंस है जो कि डिवेलपिंग एम्ब्रियो में डिफेक्ट काज करते हैं। टेराटोजन हमारे पास चार है, केमिकल, फिजिकल और मेटाबॉलिक और इन्फेक्शियस है। टेराटोजन ऐसे एजेंट्स हैं, इसके चार टाइप्स हैं। टेराटोजन ऐसे एजेंट्स हैं जो डिवेलपिंग एम्ब्रियो में डिफेक्ट्स काज करते हैं, इसके चार टाइप्स हैं। केमिकल टेराटोजेंस, फिजिकल टेराटोजेंस, इन्फेक्शियस टेराटोजेंस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, और मेटाबॉलिक टेराटोजेंस वो टेराटोजेंस होते हैं जो कि फूड वगैरह की खास होते हैं। एमसीक्यू नंबर 72 ऑप्शन बी इज करेक्ट। 73 विच न्यूरॉन इज मोनोपोलर, तो सिंपल सी बात है, सेंसरी न्यूरॉन्स आर मोनोपोलर। एमसीक्यू 73 ऑप्शन ए। Movement of the sperm inside the female reproductive tract is facilitated by prostaglandin. Prostaglandin secreted from the prostate gland, accessory gland है, accessory gland है हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। प्रोस्टेट ग्लैंड, उससे एक केमिकल सिक्रीट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि मूवमेंट ऑफ द स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, मतलब उसको आसान बनाती है। तो एमसीक्यू नंबर 74 ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्रक्टोज शुगर एंड एस्कार्बिक एसिड आर प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ, ये फ्रक्टोज शुगर और एस्कार्बिक एसिड ये सेमिनल फ्लूइड में मौजूद होता है, जो कि एसेसरी स्पर्मेटिक फ्लूइड है, और ये हमारे पास सेमिनल वेसिकल से आते हैं। एमसीक्यू नंबर 81 ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच सेल रिमेन्स एट द बेस ऑफ द membrane to maintain the germ cell line, ये असल में germ cell line है, ग्रीन नहीं, germ cell line है, germ cell line। तो इसमें अब हमारे पास जो स्पर्मेटोसाइट्स है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये दो सेल बनाते हैं। एक टाइप ए सेल है हमारे पास, एक टाइप बी सेल है हमारे पास। टाइप ए सेल में न्यूक्लियोलस होता है, टाइप बी सेल में हैफ न्यूक्लियोलस, इसमें न्यूक्लियोलस है। टाइप ए सेल में नो न्यूक्लियोलस, इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता। तो जिसमें न्यूक्लियोलस नहीं होता ये रिमेन्स
in seminiferous tubule to maintain germ cell line. तो remains in seminiferous tubule और ये to maintain germ cell line. तो इसको दोबारा पढ़ते हैं 82 which cell remains at the base membrane या basement membrane to maintain the germ cell line. तो इसमें टाइप ए सेल है. टाइप ए सेल स्पर्मेटोसाइट की डिवीजन से पैदा होता है. टाइप ए सेल और टाइप बी सेल, चूंकि टाइप बी सेल में न्यूक्लियस है, इसमें डिवीजन की एबिलिटी है, तो ये स्पर्म बना सकता है. टाइप ए सेल में न्यूक्लियस नहीं है, स्पर्म नहीं बना सकता. तो ये करेक्ट ऑप्शन है. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में जर्म सेल लाइन को मेंटेन करता है उधर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर. A phenotypic character which can be found exclusively in males. तो hairy ears ये एक ऐसा करेक्टर है जो आपको सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है, क्योंकि ये Y linked inheritance है. Y linked inheritance है ये. तो ये हमारे पास MCQ नंबर 83 और इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है. Post transcriptional modification of mRNA with 7-methyl GTP head and polytail A MPRA prevents degradation of mRNA. जिस तरह आप सबको मालूम है मैसेंजर RNA ये न्यूक्लियस के अंदर पैदा होता है. ये लेट्स सपोज न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, तो इसके अंदर मैसेंजर RNA. अब मैसेंजर RNA ट्रांसलेशन के लिए साइटोप्लाज्म में आएगा, तो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और फॉस्फेटेज इसकी मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मतलब इसकी ब्रेकडाउन करते हैं. तो इससे बचने के लिए इसकी हम कैप एडिशन, टेल एडिशन, कैप हमारे पास 7-methyl GTP है और टेल हमारे पास पोलीटेल AMP है. तो इससे बचने के लिए तो MCQs को दोबारा पढ़े. ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन MCQs नंबर 84. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ mRNA with 7-methyl GTP head and polytail AMP prevents degradation of mRNA from न्यूक्लियस एंड फॉस्फेटेज. तो ऑप्शन डी करेक्ट है MCQs नंबर 84 में. 91 MCQs नंबर 91. What will happen when an ovum is fertilized by more than 2 sperms? तो पॉलीस्पर्मी है तो इसमें नो डेवलपमेंट. इस तरह तो होता भी नहीं है. होता कुछ इस तरह है कि ओवम के साथ जो पहला स्पर्म बनता है तो वो स्पर्म बाइंडिंग साइट ऑन दैट ओवम उसको मतलब ख़त्म कर देते हैं. अगर एक ओवम में 2 स्पर्म चला गया तो फिर नो डेवलपमेंट हमारे पास होगा. क्लियर है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है 91 में? 91 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी. 92 डिस्कस करते हैं. अ प्लाज्मिड हैविंग इंसर्टेड जीन ऑफ चॉइस. अब जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर है. जिस प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट हम रखते हैं तो उसको हम विक्टर कहते हैं. MCQs नंबर 92 ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है. 93 द टेम्परेचर in polymerization of DNTPs in PCR. अब PCR में हमारे पास 3 स्टेप है, जिसमें जो लास्ट स्टेप है इसमें 3 स्टेप है. 3 स्टेप. पहला स्टेप हमारे पास डीनेचरेशन है और डीनेचरेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड है. दूसरा हमारे पास है प्रेमर एनीलिंग और उसके लिए जो टेम्परेचर है वो 54 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब पॉलीमराइजेशन तीसरा स्टेप है जो इस MCQs के स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है. इसके लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड हीट हमारे पास रिक्वायर है. तो द टेम्परेचर इन पॉलीमराइजेशन ऑफ DNTPs इन PCR रिएक्शन ये हमारे पास 72 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है. MCQs नंबर 93 ऑप्शन डी 72 डिग्री सेंटीग्रेड करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट MCQs हमारे पास है द कॉपी नंबर ऑफ PBR 322. अब PBR 322 PBR प्लाज्मिड बोलाइवर रोड्रिगस ने जो फर्स्ट क्लोनिंग वेक्टर है. अब ये जीन क्लोनिंग करता है, जीन क्लोनिंग. और इसमें अगर एक जीन हम रख देते हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट GOI जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उससे 15 कॉपीज ये बना देते हैं. मतलब PBR 322 में अगर हम एक जीन ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं तो वो उसके 15 कॉपीज बनाता है. तो MCQs नंबर 94 द कॉपी नंबर ऑफ PBR 322 पर सेल इज 15.
तो 94 MCQs में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 101 ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेन आर यूज्ड फॉर न्यूक्लियाई। अब बोरेक्स कार्बाइन ये भी न्यूक्लियस की स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मीथाइलिन ब्लू भी, अब सेप्रानिन भी न्यूक्लियस की स्टेनिंग के लिए। अब अगर इसमें न्यूक्लियस की स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता तो इसमें हमारे पास एनिलीन सल्फेट है जो कि लिग्निन की स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एनिलीन सल्फेट लिग्निन को कलर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी ये तीनों हमारे पास न्यूक्लियस की स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 101 ऑप्शन डी इज करेक्ट। विजिबल लाइट रेंजेस फ्रॉम, अब ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है जो कि इंतहाई आसान है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम जो प्लांट के लिए है 390 to 760 नैनोमीटर है, ऑप्शन डी करेक्ट है 102 एमसीक्यूज में। 103 अमाइनो एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अमाइनो ग्रुप। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये अमाइनो ग्रुप है और ये जो बाकी स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अमाइनो ग्रुप है, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 103 में ऑप्शन सी करेक्ट है। 104 a pair of centriole is present, centriole is present at the sperm, स्पर्म के बिल्कुल निक में सेंट्रियोल का एक पेयर होता है, जो पेयर हेड के साथ नजदीक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और जो सेंट्रियोल बॉडी के साथ नजदीक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो निक ऑफ द स्पर्म में दो सेंट्रियोल होते हैं, दो सेंट्रियोल, एक प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है जो हेड के साथ नजदीक होता है, जो बॉडी ऑफ द स्पर्म के साथ नजदीक होता है तो डिस्टल सेंट्रियोल। 104 में ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लोरोफिल ए, तो ये तो सिंपल सी बात है, ग्रीन। एमसीक्यूज नंबर 111 नेल्सन, इसमें हमारे पास एमसीक्यूज नंबर ऑप्शन नंबर ए ठीक है। द इन प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लाइट रिएक्शन में अगर आप एक लाइट रिएक्शन की बात करें, लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन में हमारे पास जो नेट है 3 ATP 2 NADPH2, हमारे पास 2 NADPH2 और ऑक्सीजन हमारे पास हासिल होता है। तो इसमें अगर आप लोग देख ले तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ATP 3 ATP NADPH2 2 NADPH2 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। सो द इन प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस, उसमें हमारे पास 3 ATP 2 NADPH2 और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, और हमारे पास ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 112 ऑप्शन सी। SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या हमारे पास SARS, यहाँ देखो शाबाश, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। SARS ये फ्लू वायरस का एक किस्म है, ये जो आजकल ट्रेंड भी चल रहा है कोरोना वायरस। तो SARS असल में कोरोना वायरस 1 से लगता था, और ये हमारे पास SARS, अब कोरोना वायरस है तो SARS, हमारे पास SARS कोरोना वायरस 2 है, ये जिसको हम कोरोना के लिए CO वायरस VI और डिजीज के लिए D कोविड, और ये 2019 के दिसंबर में तो इसको कोविड-19 कहते हैं। तो ये असल में रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 113 ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। हार्ट हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, it is a medication used against AIDS, and it is the combination of heart is actually the combination of 3 drugs. Heart is actually the combination of 3 drugs, और इसमें ये जो 3 ड्रग्स है तो इसमें 1 2 और 3, एक हमारे पास है टेबलेट एसिक्लोवायर है, एसिक्लोवायर, दूसरा है टेबलेट इंटीग्रेज इनहिबिटर है, और तीसरा इसमें है टेबलेट प्रोटीएज इनहिबिटर।
तो ये 3 ड्रग्स कंबाइनली हम इसको हम कहते हैं हार्ट, एंड इट इज एक्चुअली द ट्रीटमेंट यूज्ड अगेंस्ट एड्स। ऑप्शन नंबर बी 114 नंबर एमसीक्यूज में करेक्ट है। जियार्डियासिस ये हमारे पास क्या चीज है? लूज मोशंस का एक किस्म है विच इज काज्ड बाय a protozoa, a fungal-like protista known as Giardia lambia। तो MCQs नंबर 121 में ऑप्शन ए करेक्ट है। Which one of the following is not the characteristic of zygomaicota? अब zygomaicota इससे पहले भी एक MCQs में मैंने डिस्कस किया था कि zygomaicota में सिप्टेड नहीं बल्कि अनसिप्टेड हाइपी होते हैं। तो इस MCQs में which of the following is not the characteristic, तो सिप्टेड हाइपी नहीं होते zygomaicota में, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। The one MCQs number 1, 2, 3, the inhibition which is very slower, तो competitive है क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक जैसा होता है। तो एंजाइम इनहिबिटर के साथ बाइंड होकर एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स बनाता है, तो इसमें एक्टिव साइट के लिए जंग होती है इन दोनों के दरमियान। तो हमारे पास इसमें स्लो इनहिबिशन, हमारे पास कंपेटिटिव इनहिबिशन है। MCQs नंबर 1, 2, 3 ऑप्शन ए करेक्ट है। 124 द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एलिफेंट बॉडी। अब एलिफेंट हमारे पास वर्टिब्रेट में आता है तो डेफिनेटली कोलेजन करेक्ट ऑप्शन है। बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस टेस्ट में। गैमेटोबाइटिक स्टेज इज लार्जर ऑटोट्रॉपिक एंड इंडिपेंडेंट, तो ये तो प्रॉपर्टी है ब्रायोफाइट्स की क्योंकि इसमें गैमेटोफाइट लार्ज होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डोमिनेट होता है। जो मतलब ब्रायोफाइट्स का जो बॉडी हमें नज़र आता है ज़्यादातर तो हमारे पास उसका गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है। तो MCQs नंबर 131 में करेक्ट ऑप्शन है सी। 132 द पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ द किंगडम प्लांटी अगर इस तरह आ जाए द पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ किंगडम प्लांटी तो ग्रीन एल्गी है। अब द पॉसिबल एंसेस्टर ऑफ द किंगडम एनिमेलिया तो ये हमारे पास प्रोटेस्टा है। प्रोटेस्टा से हमारे पास क्या चीज़ एनिमेलिया बन गया। तो MCQs नंबर 132 ऑप्शन बी करेक्ट है। 133 द बॉडी कैविटी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज आल्सो नोन एज हीमोसील। यूनिवर्सल फैक्ट है और बिल्कुल सिंपल क्लोज सा MCQs है। 133 में MCQ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। न्यूक्लिएटेड RBC MCQs नंबर 134 न्यूक्लिएटेड RBC इज प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द बर्ड्स। बर्ड्स में जितनी भी RBC होते हैं दे कंटेन न्यूक्लियस न्यूक्लिएटेड RBC है। MCQs नंबर 134 में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। 141 टेक्ट, अब टेक्ट ट्रांसपायरेशन है, एडहेशन है, कोहेशन है और टेंशन है। पाथवे इट ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में मददगार होता है। 141 में ऑप्शन बी करेक्ट है। 142 लिंगुअल लाइपेज इज सिक्रीटेड बाय सबलिंगुअल ग्लैंड और इब्नर्स ग्लैंड। इब्नर्स ग्लैंड इन माउथ सलाइवरी ग्लैंड है जो कि लिंगुअल लाइपेज सिक्रीट करता है। 142 में ऑप्शन बी करेक्ट है। ड्यूडेनम कंसिस्ट ऑफ, ड्यूडेनम में हमारे पास 4 सेगमेंट होते हैं। सुपीरियर पार्ट होता है, एक है सुपीरियर सेगमेंट, दूसरा है एसेंडिंग है, तीसरा है हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल सेगमेंट है, और चौथा है डिसेंडिंग। तो ड्यूडेनम में 4 सेगमेंट होते हैं, सुपीरियर सेगमेंट, एसेंडिंग, हॉरिजेंटल एंड डिसेंडिंग सेगमेंट हमारे पास इसमें है। तो इसमें करेक्ट है हमारे पास ऑप्शन बी। एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ द ब्लड वेसल? डेफिनेटली हमारे पास है ट्यूनिका एंटेमा। ट्यूनिका एंटेमा में स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ये जो एपिथेलियल सेल्स है ये असल में स्क्वेमस एपिथेलियम है। स्क्वेमस एपिथेलियम ट्यूनिका एंटेमा में भी होता है, ट्यूनिका एंटेमा में होता है और स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है MCQs नंबर 144 में। इन द फॉलोइंग द अमाइनो एसिड हैविंग सल्फर
सल्फर 2 अमाइनो एसिड है, सिस्टीन और मेथ्योनिन, चूंकि इसमें मेथ्योनिन है सिस्टीन नहीं है, तो इन चारों में मेथ्योनिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है। 151 में एमसीक्यूज में ऑप्शन सी करेक्ट है। द फर्स्ट लाइन डिफेंस, इसमें फिजिकल बैरियर केमिकल बैरियर मतलब ये दोनों होते हैं, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 152 में ऑप्शन सी फिजिकल केमिकल बैरियर मतलब बोथ ए एंड बी करेक्ट है। मैच्योर वेल्फ वुडी प्लांट में मिडल लिमिला अगर नॉन वुडी प्लांट है तो नॉन लिग्निफाइड, अब वेल्फ हमारे पास वुडी प्लांट है तो इसमें मिडल लिमिला भी लेग्निन उसमें होता है, लेग्निफाइड होता है। एमसीक्यूज नंबर 153 में ऑप्शन बी करेक्ट है। टिश्यू कल्चर ये हमारे पास लेबोरेटरी में होता है, इन विट्रो प्रोसेस है, इन विट्रो को एक्स वाइब भी कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी में होता है तो इन विट्रो प्रोसेस है, इन विट्रो का दूसरा नाम एक्स वाई प्रोसेस भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप अमाइनो एसिड्स। अब पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड हमारे पास 3 है, लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, अर्जिनिन पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, हिस्टीडीन पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, प्रोलीन हमारे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड है। तो स्टेटमेंट को दोबारा रीड आउट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 161, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप अमाइनो एसिड एक्सेप्ट प्रोलीन, प्रोलीन न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है? डी। 162 ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज कॉल्ड, ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज कॉल्ड कोएंजाइम। बिल्कुल आसान एमसीक्यू से। एमसीक्यू नंबर 162 में सी करेक्ट। सेफ्रोनिन is used to stain plant tissue is a type of permanent. सेफ्रोनिन हमारे पास परमानेंट स्टेन है। Final electron acceptor in light reaction during cyclic photophosphorylation. अब साइक्लिक में अगर आ जाए तो फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें आते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है? 164 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ए। एमसीक्यूज नंबर 164 में करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। अगर इस 164 एमसीक्यूज के स्टेटमेंट को मैं अगर चेंज करूं, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर अप्लाइड रिएक्शन ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, अगर साइक्लिक की बजाय में नॉन साइक्लिक, तो फिर ऑप्शन डी करेक्ट होता। फिलहाल इसमें एमसीक्यूज नंबर 164 में ऑप्शन ए करेक्ट है। At either end of each strand of RNA is a sequence called the long terminal repeat. ये हमारे पास जीन्स है, और VPU है, VPR है, ठीक है, which helps to control, और ये हमारे पास ऐसी जीन्स है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट में जो कि HIV वायरस में होते हैं, इसके 9 जीन्स में होते हैं, तो इसमें HIV रिप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं। LTR में जितनी भी जीन्स हैं, VPR VPU जीन्स हैं, तो वो HIV के रिप्लिकेशन के लिए होते हैं, तो इसमें एमसीक्यू नंबर 171 में ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर RNA कंटेनिंग वायरसेस एक्सेप्ट स्मॉलपॉक्स, DNA कंटेनिंग वायरस है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी HCV में, HIV में, इन्फ्लुएंजा में हमारे पास RNA है। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर RNA कंटेनिंग वायरस एक्सेप्ट स्मॉलपॉक्स व्हिच इज अ DNA कंटेनिंग वायरस, जो डिक्स्ट्रो वायरस में आते हैं। 173 asexual reproduction bacteria, asexual reproduction bacteria occurs by binary fission, तो MCQs number 173 में option D correct है। Which one of the following type of radiation is used to kill microbes? Ionization radiation, ultraviolet भी है, microwaves भी है, तो मतलब ये हमारे पास physical method to control bacteria, bacterial जो infections है, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 174 में ऑप्शन डी करेक्ट है। 81 द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन फाइलम प्लेटीहेलमिंथ इज 15,000। आपकी बुक में चैप्टर नंबर 9 में ये मौजूद है और यूनिवर्सल फैक्ट है। द पीएच ऑफ द ब्लड 7.4, सेकेंड ईयर से लिया है ये, जो इसमें चैप्टर नंबर 14 है, और इसमें केमिस्ट्री भी है। पीएच केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो आप जानते हैं केमिस्ट्री में, आप लोगों ने आई एम श्योर अपने केमिस्ट्री के टीचर से पढ़ा हो। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन कार्डेट्स। कार्डेट्स में प्रीन ग्लैंड भी होता है, सीबेकस ग्लैंड भी, ये भी
कोक्सल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड ये नहीं होता, तो ये करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 183 में all of the following glands are present in chordate except coxal gland या green gland which is present in arthropods। ये असल में arthropods में होते हैं, और arthropods हमारे पास chordates नहीं है, invertebrates में ही आते हैं। 184, the body temperature varies between 25 to 28 in Prototheria, egg-laying vertebrate। About -% of carbon dioxide is carried as carboxyhemoglobin or carboamino compound, ये 23% है। कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में 70% एज बाइकार्बोनेट है, 70% एज बाइकार्बोनेट है, 23% इसमें हमारे पास है एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, और 7% एज डिसॉल्व प्लाज्मा। तो अबाउट 23%, ऑप्शन ए 191 एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन है। Which one of the following vitamin is not stored? अब विटामिन सी लिवर में स्टोर नहीं होता, बाकी सब के सब स्टोर होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट है। 192 एमसीक्यूज में ऑप्शन सी करेक्ट है। 193, cyanosis of looting to the skin is due to the lack of oxygen। ऑक्सीजन एम्पाइसेमा में हमारे पास अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो फिर साइनोसिस होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड की इनहेलिंग फिर ज़्यादा करते हैं, ब्लूइश बॉडी होता है एम्पाइसेमा में। 194, इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड, अगर ब्लड में कोई टॉक्सिन वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड में वो मिल जाए तो उस सेप्टिसेमिक ब्लड कहलाता है। तो एमसीक्यूज नंबर 194 में ऑप्शन डी करेक्ट है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7, केमिस्ट्री। Which of the following fertilizer is the richest nitrogen source on a mass percentage basis? C. Ammonia. Ammonia has maximum amount of nitrogen, maximum percentage of nitrogen. The reaction 2C plus O2 2CO is carried out by taking 24 gram of carbon and 96 gram of oxygen. Which one is limiting reagent? 24 gram of carbon is equal to 2 moles of carbon, 96 gram of nitrogen is equal to 3 moles of oxygen. 24 gram of carbon is equal to 2 moles of carbon, 24 divided by 12. 96 gram of oxygen, 96 divided by 32 is equal to 3 moles of oxygen. The equation shows 2 moles of carbon gives 2 moles of carbon monoxide. The equation also shows that 1 mole of O2 gives 2 moles of CO, 3 mole will give 6, as carbon gives the least number of moles of the product. Thus, option A is correct. Carbon is limiting reagent. Which one has maximum mass in gram? Convert each terms into grams. 24 liter of ammonia gas at STP, its mass is slightly greater than 17 gram. Avogadro number of molecules of CO2 is equal to 44 gram of carbon dioxide. 3 gram molecule of SO2, 1 gram molecule of SO2, 64 gram. 3 is equal to 3 4s are 12, 3 6 are 18, or 1 gram formula of say is 100 gram. So C has 3 gram molecules of SO2 has maximum mass. It is more than 100. X-rays are produced when a stream of electron in a X-ray tube strike the metal target B. When cathode rays, when stream of electrons collide with the metals, then in metal atom the electrons are excited, they jump from lower energy orbit to higher energy orbit. When these electrons are de-excited, that is when they jump again from higher to lower, they emit X-rays. What is the azimuthal quantum number for the last electron of silicon? Atomic number of silicon is 14. Its configuration 1 is 2, 2 is 2, 2p6, 3 is 2, 3p2, 2 to 4, 10, 12, 14. The last electron of silicon is present in P. For P, azimuthal quantum number is 1. So B is correct. Predict the total spin in nitrogen.
Nitrogen, atomic number of nitrogen 7. Its configuration 1 is 2, 2 is 2, 2px1, 2py1, 2pz1. In nitrogen there are 3 unpaired electrons. When there is single electron in orbital, its spin may be clockwise, may be anti-clockwise. The spin of this electron 2px1 is minus 1 by 2. Minus 1 by 2 is minus 1 by 2, 2pz1. And adding we get minus 3 by 2. Similarly, the spin of this electron is may also be clockwise. So plus 1 over 2 for 2px1, plus 1 over 2 for 2py1, plus 1 over 2 for 2pz1. And adding we get 3 by 2. Thus, the total spin in nitrogen may be minus 3 by 2, may be plus 3 by 2. Option B is correct. Which one is a set of degenerate orbital? D. 3D orbital. Orbitals having same principal quantum number and are present in the same subshell are degenerate, that is they have same energy. 3D orbitals, all they are present in the same subshell, all they are present in the same 3D subshell, all they have same principal quantum number, that is 3. Option D is correct. Resonance structure can be written for ozone. In ozone there are pi electron, in SO2 there are pi electron, in benzene there are pi electron. That system which has pi electron, such system will show resonance, thus all of these. What is the bond order of SO4? Formula for bond order, maximum valency of central atom. In this, central atom is sulfur, maximum valency of sulfur is 6. Maximum valency of central atom divided by total number of atoms around central atom. There are 4 atoms around sulfur, so 1.5. Option A is correct. In a change from PCl3 to PCl5, the hybrid state of phosphorus changes from option C. In PCl3, phosphorus is central atom. In the valence shell of phosphorus, there are 4 electron pair, thus it undergoes sp3 hybridization. In PCl5, phosphorus is central atom. In the valence shell of phosphorus, there are 5 electron pairs, thus in this sp3d or dsp3 hybridization occur. Option C is correct. sp3 to sp3d. A mixture of helium and argon contains 3 moles of helium for every 2 moles of argon. The partial pressure of argon. Partial pressure of argon is equal to number of moles of argon, 2 moles. Total number of mole, 2 plus 3. So 2 by 5. Option C. A gas which has high critical temperature. Option C. Has high or low critical pressure depending on the nature of gas. If gas is polar, critical pressure will be greater, critical temperature will be greater. If gas is non-polar, critical pressure will be less, critical temperature will be also less. Option C is correct. Which one is intensive property? D, all of these. That property which depends on the nature of the substance and not on the amount is called intensive property. Surface tension, boiling point, viscosity, all they are intensive properties because they depend on the nature of the substance, not on the amount of the substance. If, for example, if water is in less amount, if it is in greater amount, it has constant surface tension, constant boiling point, constant viscosity. Which one has maximum London dispersion forces? The strength of London dispersion force depends on the molecular size. Greater the molecular size, stronger will be the London dispersion forces. In the given 4 noble gases, krypton has the largest molecular mass, largest molecular size, thus in krypton, London dispersion forces are maximum. Dry ice is the example of molecular crystal C.
at minus 80 degrees centigrade temperature, carbon dioxide is in solid state. When carbon dioxide is in solid state, it is just like snow, ice. Thus, at minus 80 degrees centigrade, solid carbon dioxide is called dry ice. Why it is called dry ice? Because it does not wet the surface. आम ice पानी से जो बन जाता है, it wets the surface. But solid carbon dioxide does not wet the skin, does not wet the surface. Thus, it is molecular crystals, and it is called dry ice. All of the following are hard except molecular crystal. Ionic crystal, covalent crystal, metallic crystal are hard because they contain intramolecular forces. Molecular crystal are soft because they contain van der Waals forces. Van der Waals forces are weaker than intra. So due to weak intermolecular forces, due to weak van der Waals forces, molecular crystal are soft. For the reaction, the standard enthalpy of combustion is given by. Standard enthalpy of combustion is defined as the amount of heat released. It is always exothermic. When 1 mole of a substance in standard state is burned completely. In this equation, there are 2 moles of methane, while enthalpy of combustion is for 1 mole. Thus, the heat which is released in this reaction is called heat of reaction. If heat of reaction is divided by 2, heat of reaction अगर हम 2 पर divide करें, तो that will be for 1 mole of methane, or the heat which is released when 1 mole of the substance is burned completely is called standard enthalpy of combustion. So option A is correct. Which one has 0 standard enthalpy of formation? In the given 4, sulfur is in standard state. The standard state of sulfur is solid. When element is in standard state, its standard enthalpy of formation is 0. The standard state of iron solid, the standard state of bromine liquid, standard state of copper solid. Iron, bromine, copper, they are not in standard state. Thus, their standard enthalpy of formation is not 0. Sulfur is in standard state. Thus, the standard enthalpy of formation of sulfur is 0. 2:2 plus O2, 2:3 Kc, 1 × 10⁻30 at 150 degrees centigrade. Which statement is correct? As Kc is greater than 10⁻3, when Kc is greater than 1000, then forward reaction will occur to greater extents. Thus, product will be formed in maximum amount. Therefore, product is stable, reactant is unstable. Option C is correct. SO3 is stable. What is the unit of Kc for the equilibrium system? Unit of Kc can be determined by this equation: mole per dm cube delta n. Delta n, number of moles of product minus number of moles of reactant. Delta n is equal to, there are 2 moles of product and 3 moles of reactant. Delta n minus 1. Thus, for this system, the unit of Kc is mole per dm cube minus 1. Option A is correct. The ionic product of water change when temperature is changed. Kw, ionic product of water, is equal to H ion OH ion. When temperature is increased, ionization of water will be increased. Therefore, Kw is directly proportional to temperature. When temperature is increased, Kw value will be increased and vice versa. Thus, option D is correct. The pH of solution A, B, C, D are 9.5, 2.5, 3.5 and 5.5 respectively. The most acidic solution is pH
is inversely proportional to acidity. In the given 4 solution, solution B has the lowest pH, that is 2.5. Thus, it is the most acidic. Which one is Lewis base? Alkene, alkyne, benzene, all of these. According to Lewis concept, those molecules in which there are multiple bonds, that is double and triple bond between similar atoms, they will be Lewis bases. In alkene there is double bond between 2 carbon, in alkyne there is triple bond between 2 carbon, in benzene there are or double bond between carbon atoms. Thus all they donate electron pair to electrophiles. Thus they are Lewis bases. For a certain reaction, the unit of rate constant is, the reaction is unit of rate constant, unit of K is equal to mole per dm cube 1 minus n per second. By this formula, by this equation, we can determine the unit of rate constant for any order of reaction. N stands for order. In option in the given relationship, the value of n is 3. It means the reaction is third order. Option C is correct. What is the oxidation state of carbon in sucrose? 0. We know according to the rules, the oxidation number of compound is 0. According to the rules, the oxidation state of hydrogen is +1, while that of oxygen is -2. We find the oxidation number for carbon. इसके लिए x सपोज करें, there are 12 कार्बन, तो 12x plus 22 minus 11 into 2 minus 22 is equal to 0. So 12x is equal to 0, x is equal to 0. Thus, the oxidation state of carbon in sucrose is 0. How many Faradays are required to leave 32 gram of oxygen? Chemical equivalent of element can be determined as atomic mass divided by valency. Chemical equivalent of oxygen, atomic mass 16, valency 2, 8 gram. 8 gram is the chemical equivalent of oxygen. 1 Faraday, that is 96,500 coulomb charge, deposits 1 chemical equivalent or gram equivalent. So to deposit 32 grams of oxygen, 4 Faradays are required. 1 Faraday deposits 8 gram of oxygen, 4 will deposit 32 gram of oxygen. In the reaction, chlorine is both. The oxidation state of chlorine 0, oxidation state of chlorine in NaCl -1, oxidation state of chlorine in sodium hypochlorite +1. In this reaction, chlorine is oxidized as well as reduced. Thus, option C is correct. In this reaction, chlorine is oxidizing agent as well as reducing agent. What is the chemical equivalent of sulfuric acid? Chemical equivalent or gram equivalent of acid can be determined as molar mass of acid divided by number of ionizable hydrogen ions. The molar mass of sulfuric acid 98 gram, it contains 2 ionizable hydrogen, 49 gram is the chemical equivalent or gram equivalent of sulfuric acid. Thus option B is correct. Which one of the following has the highest boiling point? Option B. In option A,
there is 1 mole of urea. 1 mole of urea contains Avogadro number of molecule of urea. Option B में there is 1 mole of sodium sulfate. Sodium sulfate is ionic compound, it is electrolyte. When 1 mole of sodium sulfate is ionized, it gives 2 mole of sodium ion, 3 mole of sulfate ion. Thus, in this solution, there are 3 into Avogadro number of ions. C 1 mole of glucose, it contains Avogadro number of glucose. Glucose is non-electrolyte, it is not ionized. 1 mole of NaCl, it means there is 1 mole of sodium ion, 1 mole of chloride ion. This solution contains 2 into Avogadro number of ion. That solution which has maximum number of particles will have maximum boiling point. As in solution B, in option B, there are maximum number of particles, thus 1 molar sodium sulfate has the highest boiling point. Colligative property depends on the nature of solute F. Solute is electrolyte. If solute is electrolyte, then different electrolyte solute will give different number of moles of ion when dissolved. Thus, colligative effect will be different. Colligative property do not depend on the nature of solute. If solute is non-electrolyte and non-volatile, but if solute is electrolyte, if solute is volatile, then colligative property depend on the nature of solute. Option B is correct. What is the anhydride of HClO4? Option A. Cl2O7. It is also perchloric acid, but it is without water. It has no water. When it is dissolved in water, it gives perchloric acid. So there is no difference between HClO4 and Cl2O7. दोनों में difference ये है. HClO4 contains water. Cl2O7 it is anhydrous, it is without water. So option A is correct. Which one has the highest boiling point? Chlorine Cl2, phosphorus P4, argon Ar, sulfur S8. All these are non-polar molecules. They contain London dispersion forces. Strength of London dispersion forces depends on molecular size. Greater the molecular size, strong will be the London dispersion forces and higher will be the boiling point. In the given 4, sulfur has maximum molecular mass, maximum molecular size. Thus, in sulfur, London dispersion forces are the strongest and thus it has the highest boiling point. Considering reduction potential, the best reducing agent is lithium. In electrochemical series, lithium has the lowest reduction potential, that is minus 3.05 volt. When reduction potential is less, then elements will lose electron easily. Or that element which loses electron easily will be strong reducing agent. As in electrochemical series, lithium is on the top, it has the lowest reduction potential, thus it is the strongest reducing agent, it is the best reducing agent. The maximum ion mobility exhibited by D. Down the group, size of cation increases, charge density decreases. Cesium is at the bottom, it has the least charge density, thus it is lighter and it will move slowly. Thus, it has maximum ion mobility. So, this shows down the group, size of cation increases, charge density decreases, therefore, ion mobility increases. Which one is the most volatile? HCl in the given 4. HF is the least volatile due to hydrogen bonding. In the remaining 3, HCl has the lowest molecular mass, thus it has the weakest London dispersion forces, thus it is the most volatile. It is vaporized easily. All of the following are amphoteric except SiO2. SiO2 is acidic. When it is dissolved in water, H4SiO4, silicic acid is produced. The remaining 3, beryllium oxide, plumbous oxide, stannous oxide, they are amphoteric.
That is, they have both acidic and basic characters. All of the following are M-pure except 24 karat gold as pure gold. It is element, bronze, brass or steel. They are alloys. Alloy is a homogeneous mixture of two or more than two metals. 24 karat gold is pure gold. Carat is the unit of purity in case of gold. So when gold is 24 karat, it means it is elemental gold, it is pure. If the quality of gold is less than 24, it will be impure, it will contain other metals. Ethylene diamine is bidentate. That ligand which donates two electron pairs is called bidentate. Ethylene diamine NH2, CH2, CH2, NH2. There are two nitrogen, each nitrogen has one lone pair. Thus, ethylene diamine can make two coordinate covalent bond, it can donate two electron pair, thus it is bidentate. What is the oxidation state of cobalt in this complex? According to the rule, oxidation state of chlorine -1, oxidation state of chlorine -2, oxidation state of ammonia 0. Now we will must take the oxidation state of cobalt S+3 because as a whole the oxidation state of compound is 0. So option A +3. What is the coordination number of iron in pentacarbonyl iron 0? Coordination number, which is also called legancy, is the number of coordinate covalent bond formed by the ligands with transition metals. In the given complex, 5 carbon monoxide molecules have made 5 coordinate covalent bond with the vacant orbitals of iron. Thus, in this, the coordination number or legancy of iron is D, 5. What is the geometry of this complex? In this complex, coordination number of copper is 2 plus 4, 6. When coordination number is 6, geometry will be octahedral. Geometry of complexes depends on coordination number and nature of hybridization. If coordination number in a complex is 6, then hybridization will be sp3d2 or d2sp3 and geometry will be octahedral. In octahedral geometry, all bond angles are 90 degree. Which one is colorless? All of these. Zinc plus 2, Ac plus 3, Ti plus 4, they have no unpaired electron, thus all they are colorless. That species which has unpaired electron, in such species DD transition will occur, it will be colored, but in these there are no unpaired electron, thus they are colorless. Furan is heterocyclic. Heterocyclic are those closed chain compound in which the ring contain different atoms. In furan, the ring contain 1 oxygen and 4 carbon, thus it is heterocyclic, but it is aromatic. Heterocyclic hai or aromatic bhi hai. In this there are 6 delocalized pi electrons. According to Huckel rule, when there are 6 delocalized pi electron, species will be aromatic. So furan is heterocyclic but aromatic. Which one is aliphatic hydrocarbon? Aliphatic hydrocarbon is are defined as acyclic hydrocarbon. Acyclic means open chain hydrocarbon, and alicyclic hydrocarbon, that is closed chain hydrocarbon, are collectively known as aliphatic hydrocarbon. Acyclic and alicyclic hydrocarbons are collectively known as aliphatic hydrocarbon. Alkane, alkene, alkyne, they are acyclic open chain. Cycloalkane, cycloalkene, cycloalkyne, they are closed chain alicyclic. So acyclic plus alicyclic is equal to aliphatic. The word aliphatic is derived from the word aliphos, which means fats. For the first time they were found in fats, thus hence their name is aliphatic. So all of these, cyclopropane is a member of cycloalkane, propene is a member of
alkene family, cyclohexane is a member of cycloalkyne. So all these are aliphatic. Nitration of benzene is the example of SE reaction. SE stands for electrophilic substitution reaction. In nitration of benzene, hydrogen of benzene is replaced by NO2 plus, which is electrophile. Such reaction in which an atom is replaced by electrophile is called electrophilic substitution reaction. So nitration of benzene is the example of electrophilic substitution reaction, SE reaction. In this, electrophile is NO2 plus, catalyst is sulfuric acids. In which mechanism intermediate is formed? D. In E1 and SN1. Tertiary alkyl halide is ionized to give stable tertiary carbocation. Carbocation is intermediate, while in SN2 and E2 transition state is formed. Intermediate और transition state में फर्क क्या है? Transition state is more unstable than intermediate. So in E1 and SN1 mechanism, intermediate is formed, that is carbocation, while in E2 and SN2 mechanism, transition state is formed. Thus option D is correct. Which one is the most unstable? Option A. In this there is no alkyl group. Stability of carbocation is directly proportional to number of alkyl group. Tertiary carbocation has 3 alkyl group. Tertiary carbocation is the most stable. C3 plus, in this there is no alkyl group, thus it is the most unstable. Carboxylic acid can be reduced to with lithium aluminum hydride. It is powerful reducing agent. In the presence of lithium aluminum hydrides, carboxylic acid is reduced to primary alcohol. For example, C3COOH, acetic acid. If it is treated with lithium aluminum hydride, it gives hydrogen. Hydrogen is then added to it. It produces nascent hydrogen. Nascent hydrogen then reacts with acetic acid to give C3CH2OH. This is primary alcohol. C3CH2OH. Which one is stable to oxidation under normal condition? Tertiary alcohol. On oxidation, primary alcohol gives aldehyde. Secondary alcohols give ketones. Tertiary alcohol is not oxidized in normal condition. In the presence of very strong oxidizing agent, that is CrO3 and HCl, tertiary alcohol is oxidized to give alkene, but in normal condition, it is not oxidized. Primary, secondary are oxidized in normal conditions. Among the following, the most acidic is phenol. Phenol has Ka value 10 minus 10, water has 10 minus 14, alcohol has 10 minus 16 to 10 minus 18, terminal alkyne 10 is minus 25. In the given 4, phenol has maximum Ka value acid ionization constant, thus in the given 4, it is the most acidic. What is the oxidation product of C3CH2 COC3? C3CH2 COC3, it is a member of ketone family. On oxidation, all aldehyde and ketone give carboxylic acids. This is unsymmetrical ketone. If this part is oxidized, it will give propanoic acid. If this part is oxidized, it will give acetic. Option A is correct. There is a rule for this. If ketone is unsymmetrical, then that part will be oxidized, which has minimum number of carbon atom. In this part, there are minimum number of carbon atom. Thus, this part is oxidized, and the correct product is acetic acid, ethanoic acid. The oxidation product of aldehyde, carboxylic acids.
On oxidation, both aldehyde and ketone give carboxylic acids. Which one is the most reactive? Acid halide. Acid halide is the most reactive. This is acid halide. Atomic number of oxygen 8, chlorine 17. अब दोनों की एटॉमिक नंबर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इट मीन्स का क्लोरीन एटम इज बिगर इन साइज और atomic number of carbon is 6. The difference between the atomic number of carbon and chlorine is very greater. It means carbon has smaller size, chlorine has bigger size, as the bond between carbon and chlorine is very weak. When bond is weak, during the reaction it will be broken down easily, thus it is the most reactive. The best source of iron is organ meat. It contains maximum amount of iron, thus it is red in color. Liquid form of triglyceride at room temperature are called oils. Oils are liquid triglycerides. Fats are solid triglycerides. Oils are liquid. Which one is chromophore? Carbonyl group, nitro group, azo group. All these are chromophores. Chrome means color, phore means bearing, producing. A group which produces color is called chromophore. All these are chromophore. What is the temperature range in mesosphere A? -2 to -92 degrees centigrade. Which one is the source of arsenic pollution? Smelting of gold ore, smelting of iron ore, smelting of lead, all these are. During metallurgy of gold, iron and lead, many pollutants are produced. Such pollution is called arsenic pollutions. Which one is IR inactive? H2O polar, HCl polar, chloroform polar, या trichloromethane polar. Polar molecules are IR active. H2 is non-polar, thus it is IR inactive. Option D is correct. Which one has zero spin and zero magnetic moment? Option A. In carbon 12, proton 6, neutron 6. When in nucleus proton and neutrons are even, then it has no net spin. In the remaining three, carbon 13, it contains 7 neutrons, fluorine 19, it contains 9 proton, N15 it contains 7 proton. When protons are odd, when in nucleus protons are odd, या neutrons are odd, या both are odd, then such nuclei will be NMR active. They will have net 1 or 2 spins. In carbon 12, both proton and neutrons are even, thus they have no net spin. Option A is correct. Above neutral temperature, the thermo EMF in thermocouple variation of thermo EMF with temperature is like this. This temperature is known as neutral temperature, the temperature at which thermo EMF has its maximum value. This is inversion temperature, where the thermo EMF has zero value. Now, अगर हम देखें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बियॉन्ड न्यूट्रल टेम्परेचर थर्मो ईएमएफ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ठीक है जी. सो वी कैन से डिक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर. अबव न्यूट्रल टेम्परेचर द थर्मो ईएमएफ डिक्रीजेज. Relation between stopping potential of metal and maximum velocity of photon. Kinetic energy maximum is EV naught, where V naught is stopping potential, half m V square equal to EV naught, and from this relationship V naught is directly proportional to V square.
transformer, NS by NP, Vs by Vp, and Vs equal to Ns by Np N2 Vp। यहां पर वैल्यूज पुट करने से आपके पास Vs आ जाएगी 3000 डिवाइडिंग बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो इससे आएगी 240। एक्टिविटी देखिए, इसके लिए शॉर्टकट n नॉट 2 पावर n, where n is basically the number of half-lives which can be find out total time dividing by half-life. N equal to 10, the total time dividing by 2.5, the result is 4. So it means we have only 4 half-lives. .1 Curie. The power factor, the factor upon which power depend. हमारे पास पावर फैक्टर होगी 1 यूनिटी when phase angle is 0, और फेज एंगल 0 सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में होती है। एक when there is only resistor, और दूसरी जब RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस अकर हो जाए, अगेन वी हैव ओनली रेजिस्टेंस। सो यूनिटी when the circuit contain only resistance. स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप जो है ये एक्सेलरेशन होगी। ये तो सिंपल सी बात है। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड, सबसे लॉन्गर वेवलेंथ रेड की है। We know that force F dash is equal to F dividing by K, where K is dielectric constant, आप इसको एप्सिलॉन R भी कह सकते हैं। आपसे मांग रहा है the ratio of force between two charges in air and that of medium। ये एयर है, ये मीडियम है, क्रॉस कर ले तो K आ जाएगी F डिवाइडिंग बाय F डैश, मीन आपके पास रेशो है K/1। स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर वाइब्रेट इन 4 सेगमेंट। लेंथ आपके पास 2 मीटर है, N आपके पास कितना है 4। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स L डैश। We know that distance between 2 consecutive nodes is always half of the wavelength, and relationship for wavelength is 2L by N. So lambda 4, 2 multiplied by 2 divided by 4, lambda आ जाएगी 1 मीटर। ये 1 मीटर वैल्यू पुट करें यहां तो आपके पास 1/2 और 0.5 मीटर आ जाएगी। कलर इन अ थिन फिल्म, थिन फिल्म में जो बेसिक फिनोमेना है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू कंफर्म द वेव नेचर ऑफ लाइट, सो इट ओनली कंसिस्ट ऑफ वेव्स। ये फैक्ट एस्टेब्लिश कर रही है। 2 पॉइंट चार्जेस, देखिए एक चार्ज 2 कूलम, दूसरा चार्ज 2 कूलम, और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स 12 न्यूटन। लेकिन अगर इसको मैं -2 कूलम चार्ज दूं तो ये हो जाएगा न्यूट्रल, ये भी हो जाएगा न्यूट्रल। तो न्यूट्रल बॉडीज के दरमियान फोर्स क्या होगी? 0। द स्पीड ऑफ साउंड वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी, यहां देखे
Speed of sound rarely depends upon frequency and pressure, therefore speed of sound will be same. ठीक है जी, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. Of the following properties, V is equal to F lambda. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है ये इंडिपेंडेंट है. Momentum E is equal to HF, and we know that E is equal to mc square, mc into c, p into c. तो मोमेंटम आ जाएगी E by c or HF by c, or simply you can say h by lambda, inversely related to wavelength. A small drop जब हम रिलीज करते हैं लार्ज हाइट से तो ये फौरन गेन कर लेती है टर्मिनल वेलोसिटी, देयरफॉर इट इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट. अ मेटल शीट कॉन्ट्रैक्ट करने से इसके दरमियान में बना हुआ होल जो है ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि जब मॉलिक्यूल इसके एक्सपेंशन होगी इसमें तो ये एक्सपेंशन की वजह से सेंटर की तरफ आएंगे. A loaded spring, we know that when a spring is cut, the spring constant increases, its stiffness increases, and its shortcut is n times k, wherein the number of times we divide a spring. Here spring is divided into 4 equal parts, so the spring constant of each part is 4k. Now the time period 2 pi m by k under root t dash 2 pi m by k dash. Putting the value you will get t by 2. ठीक है जी, तो टाइम पीरियड आपके पास आ गई t by 2. Which of the following particle is stable? The most stable is proton, which has 32 year half-life. Weightlessness in a spaceship is free fall of the spaceship. Weightlessness is a situation where apparent weight becomes 0. Height of projectile, maximum range of projectile cannot exceed 4 times the height. 4 multiplied by 50, the result is 200. तो आपके पास आ जाएगी 200. A simple pendulum, देखिए सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड है 2 पाई L by G अंडर रूट. अब यहां पर G की वैल्यू है GME डिवाइडिंग बाय R प्लस H. ये हाइट पर चली गई इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो G की वैल्यू हो जाएगी G बाय 4. अगर G की वैल्यू 4 टाइम रिड्यूस होती है, G की वैल्यू 4 टाइम रिड्यूस होती है, तो टाइम पीरियड T2 आ जाएगी 2 पाई L by this 2T1 and T1 by T2 is equal to 1 by 2. Here this term is basically T2 by T1. ठीक है, अगर आप T2 by T1 कर दे इसको, तब आपके पास आंसर आएगी 2, दिस ऑप्शन.
Otherwise, your option will be 1 by 2. A particle moves with a velocity this. आपको velocity given है, आपको force given है, आपसे power मांग रहा है F dot V. Force की वैल्यू ये है 20I plus 15J minus 5K dot 6I minus 4J plus 3K. आप इसको सिंप्लीफाई करें, इससे आएगी 45. Two bodies of mass m and 4m are dropped from the top of the tower when they reach the ground. अगर एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी होती है 2gh अंडर रूट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम, स्पीड दोनों के लिए सेम, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी m1 by m2, 1:4, क्योंकि एक का मास है m और दूसरे का है 4m, mm कैंसिल, रिजल्ट आ जाएगी 1:4. When terminal velocity is reached, terminal velocity हम डिफाइन करते हैं the maximum uniform velocity, maximum uniform velocity. So when it become uniform, acceleration will become 0. Electron is moving north in a region where magnetic field is towards south. North, east, south, west. मैग्नेटिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंगल हमारे पास 180 है. मैग्नेटिक फोर्स होता है QEB sin theta, theta 180 and sin 180 is 0. So the corresponding force will be 0. 1 kg mass potential energy is mgh. ठीक है जी. 1 joule relative to ground, ये 9.8. h आपसे मांग रहा है, h हो जाएगी 1/9.8 and this is 0.102 meter. One kg, again kinetic energy half mv square, v is equal to 2 times kinetic energy by m under root. So you will get 2 under root and 2 under root is 1.4. A car moving at 60 km per hour. Vf equal to Vi plus At. A is equal to Vf minus Vi dividing by T. You will get minus 60 dividing by 3. So the result will be retardation 20 kilometer per hour per second. Rest mass of photon is 0. P is pressure, P by rho. Pressure unit is Newton per square meter and density is kg per cubic meter. So we can write Newton per square meter, meter cube dividing by kg. Square cancel with this. The result is Newton meter per kg. Now Newton can be written as kg meter per second square, meter by kg. Kg cancel and you get meter square per second square.
When beads produce y1 equal to a sine 1000 pi n to t. If we compare it with the standard, the result will be this one. So omega 1 is 1000 pi. We know that omega is 2 pi f omega over 2 pi. 1000 pi dividing by 2 pi, f1 become 500 hertz, and similarly f2 become 504 hertz, where beat frequency is known as the difference. So the difference of these two, 504, 500, the result is 4 hertz. Temperature at which reading of Fahrenheit, we know that F minus 32 by 180 is equal to C minus 0 by 100. Fahrenheit scale पर temperature double होगा as compared to centigrade. We can write 2x minus 32 is equal to 9 by 5 into x, which can be written as 2x minus 9 by 5x equal to 32. 10 minus 9 by 5 into x, 32, and x equal to 160. 5 यहाँ आकर मल्टीप्लाई करें, 10 माइनस 1 से आएगा 1, x बाई 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो यह आ जाता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड. फोर्स, व्हाट इज द पावर? तो पावर तो सिंपल बराबर होता है एफ वी के. An adiabatic process, the process in which heat neither enter nor leave a system, is known as adiabatic. Photodiode is used to measure light intensity. जितनी light intensity ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, उतना ही करंट ज़्यादा, तो easily हम measure कर सकते हैं. The product of pressure and volume, P delta V is work and work is energy. Minimum number of equal in magnitude, तो दो ही हैं. दो forces magnitude में बराबर हो. Penetrating power of X-ray does not depend on current, क्योंकि current से intensity बढ़ेगी, यानी number of photons बढ़ेंगे, जिससे number of penetrating power of X-ray does not depends upon current. जितना करंट ज्यादा होगा फोटो इलेक्ट्रिक फिलामेंट करंट के इंक्रीज करने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होने पर ज्यादा फोटॉन्स, और फोटॉन से पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगी नहीं, इंटेंसिटी बढ़ेगी. तो ये इंडिपेंडेंट है. A एंड B आर 2 पॉइंट्स. देखिए आपके पास वर्क गिवन है 16 जूल, चार्ज गिवन है 4 कूलम, और आपसे पोटेंशियल मांग रहा है. तो पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. 16 by 4 से आता है 4. Assalamu alaikum, that's the full book test. Let's start with the first question. Lisa said, what will be the charges? Now this is a question, and whenever you get a question in direct and indirect narration, you change the question into a positive statement, right? Where the question word remains the same.
It remains on the same place, it never changes and it is never shifted, right? So as it is an inquiry, so we will shift the reporting verb into any question word which is inquired, right? So no problem till this point. Now, Lisa inquired what? The question word will remain the same. You see, it is the same everywhere. Now, let us look at the question. Will be the charges. The charges, as we know that when we have will in direct speech, we change it into would. So here we have got would. We have got would here. We have got will here, so it is definitely not the answer, right? Now, we have got D, C and A. D, B and A. Now Lisa inquired what the charges would be. The charges would be is a statement, right? Now look at B. Lisa inquired what would be the charges. It's again a question. It's not a positive statement. So it is not the answer. Then if you look at the fourth, Lisa, the D, Lisa inquired what the charges would be. This is also right, but the problem is with this question mark. We do not use a question mark in an indirect statement. So the right answer is A. 20. Mother said to me, listen to your elders. Now, it is an imperative statement, listen to your elders. Mother advised, these three are okay. Now, mother said to me, so mother advised me. So far, no problem. Mother advised me and mother advised me. As we know that an imperative statement, when we change it into indirect speech, we make the verb as infinitive. We turn the verb into infinitive. And infinitive is to plus base form of the verb. So, to listen, to listen, to listened. Now this is not correct because in infinitive we use the base form of the verb, not the second, not the first, not the third form, right? So this is not the answer, and let's look at the two now. Mother advised me to listen to your, as this is the second person, so the second person changes according to the object. The object here is me. So mother advised me to listen to your, so your will change into my elders. And if you look at this, mother advised me to listen to your. So we have not changed the second person. We have not changed the second person into the object. So this is also not the answer. So we are left with the correct answer, A. So A is the correct answer. Mr. Peter said, do not go near the house. Okay, so someone is forbidding us, right? And Mr. Peter is actually forbidding us. So, Mr. Peter forbade, and forbade. No problem with the first three words. Now, let us look further. Mr. Peter forbade going near the house. Remember, there are certain verbs after which we use gerund. What is gerund? Gerund is the ing form of verb which functions as a noun, right? And there are certain words which are negative in themselves, right? Like the word never. So never has a hidden not in it. Another word is unless. Unless has a hidden not in it. So forbade also has a hidden not in it. So you don't need to use another not after forbade. So if you look at the second statement, we have used not, which is not the correct answer. Then again we have got not, which is also not correct. So forbade going near the house is the correct answer. None of these is not because we already have a correct answer. Forbade is a verb after which we always use gerund. So forbade going near the house is the right answer. 40. The boy said,
may I come in? Now, may I come in is it's an imperative sentence once again, because it's a request, right? Okay, so request, ask is fine. The boy asked if. Now, if you look at the statement, may I come in is a polar question. What is a polar question? A question which needs yes or no as a response. So, may I come in needs yes or no as a response. So, it's a polar question. So, whenever you get a polar question, so instead of using that after the reporting verb, you have to use if or whether, right? Okay, so we have used if, and if. So no problem till if. Let us look further. The boy asked if he could come in. Remember this thing, whenever you use may and you ask or you seek permission, so you can use could in indirect speech instead of may, and you can also use might. So both could and might are possible. So we have got the boy asked if he could come in, and the boy asked if he might come in. So we have got both these answers as correct. So the correct option is A and B. Why C is not correct? Because the boy asked if he may. Remember, may always change into might. So may is not the correct answer. So the correct answer is D, both A and B. Okay. 50. The teacher made us work very hard before the exam. Now, mad here is a causative verb. A causative verb is a verb which is used when we cause other people to do something for us. For example, you ask someone to do something for you, so you use causative verb. Now, the teacher made us work very hard, like the teacher caused us to work very hard. Now, whenever you get a causative verb, so what are you going to do is you have to use another verb in infinitive. The causative verb will remain the same, but the second word, a verb after the causative verb, will be infinitive. So, we were mad in passive voice, sorry, not in narration, in passive voice. We were mad. Now, work is another verb we have got. So, we were mad to work. See, infinitive. Infinitive is to plus base form of the verb. So we were made to work very hard before the exam. Now, if you look at the tense, the teacher made us. Now this is simple past tense, and simple past changes into past continuous with ing, without ing form of the verb. So you see, we were is past continuous. We have been is present perfect. We do not change it into present perfect. We had been is past perfect. We do not change it into past perfect. So as we have the correct answer, so none of these is also not the right answer. So A is the right answer. We were made to work very hard before the exam. Who said it? Change the voice. Who will change into by whom in passive, right? And you can use it in the beginning of a sentence or at the end of a sentence. So, it was said by whom is also right, and by whom was it said is also right. So, both A and B is the right option, not these two. Although these two are also right, but when both of them are right, so both answer has this option C, and D is not the right answer. Snow covered the mountains. Change the voice. The mountains were covered with snow. The mountains were covered by snow and from snow, and none of these, right? From snow is not possible. By snow and with snow can have some possibility. Let us look at the difference between with and by.
We use with when something itself does not do something and it needs the help of another thing, right? And we use by when something does not need the help of anything. For example, the lock is opened dash key. Now, the key itself cannot open the lock, so it needs the help of someone to open the lock, so we will use with. And the picture is drawn dash me. I don't need the help of anyone, like I don't need someone to hold my hand and draw the picture. I can use my hand myself, so I will use by here. Now, what actually causes the snow? Does the snow cause itself or no? There are certain forces which cause snow. So yeah, there are certain forces which cause snow. So we have to use with. So A is the right option. He seems happy to us. Change the voice. Remember one thing, while dealing with active voice and passive voice, you need to look at this formula. Patap. After verb, if any of these 5 things come, that sentence is not changeable. You cannot change that sentence into passive voice. Patap stands for preposition, adjective, place, adverb, and time. Sorry, this number 3rd is time. Right? So if after the verb there is a preposition, you cannot change it into passive. If after the verb there is adjective, you cannot change it into passive. If there is time expression, you cannot change it into passive. If there is place or if there is adverb, you cannot change it into passive. Now look at this. He seems. Now seems is a verb, right? And after the verb, we have got happy. Happy is adjective. So after verb, look at the formula patap. We have got adjective. So if you get adjective after a verb, you cannot change it into passive. So the right option is none of these. You cannot change any, you cannot change this sentence into passive, right? Okay. You were studying when she dash. This is past continuous tense, and past continuous tense talks about an action which was in progress when another action interrupts it, right? So the action which was in progress will follow the past continuous structure, and the action which interrupts the continuous action will follow the simple past tense structure. So what is this? You were studying is past continuous, so we need a past simple tense structure. When she calls will be present tense, which is not right. When she was calling is past continuous, which is also not right. And when she called is simple past. So A is the right option. A. Thank you. Now 100. They had left the hall before the speech dash. Now this is past perfect, and past perfect talks about past. It expresses an action which was completed before another action in the past. This figure mentions past. This shows past. The complete figure shows past, but this is the earlier past and this is the later past, right? So an action which was completed earlier will use structure of past perfect, and an action which was completed later or which happened later will follow past simple tense, right? So if you look at the options available, they had left the hall, this is past perfect. The speech ended. Ends is present. Both cannot be the possible answer because it's present, and none of these is not the answer, so we have got A as the right option.
We live dash street number 5. With street we use on as a preposition, so A is the right answer. We live on street number 5. The word brag. Brag means to say high about something, to say big about something, right? To glorify something. So it is dissimilar, means it is the opposite of what? Exaggerate? No. Boast? No. Glorify? No. So what is the right answer? Ridicule, when you mock someone, when you show less of something, right? So C is the right option. Okay, 130. I'm looking dash my teacher because he's my inspiration, right? Look at, look to, look into, look for, look out, and there are so many other prepositions. Whenever they come with look, they have quite different meanings. For example, look at means when you are physically looking at something, right? Look to means when you are following something. Look into means when you are trying to solve something. Look for means when you are finding out something. Look out means when you're doing something carefully, right? So if the teacher is inspiration, the student must follow him or her. So I'm looking to, because you're following your teacher. So I'm looking to my teacher because he's my inspiration. So B is the right option. He hit him dash stick. As I already explained the difference between by and with. With is used when something needs the help of another. So the stick itself cannot hit someone unless it is used by someone. So it needs the help of an agent. So with is the right answer. By and through cannot be the possible answer. I slipped because I was standing on the brink of the river. Brink of the river. The underlined word means, now you see, if you don't know the meaning of the brink, let us use a trick. Bank, you must know the meaning, bank. Edge, you also know the meaning of edge, like they represents the side of something, right? Bank also serves the size. Verge, if you don't know verge, and look at the fourth option, which is all of these. So if A is also right, B is also right, and there is no any opposite answer, and the fourth option is actually D, so it definitely is also the answer. So D is the right option, because bank and edge, you know that river is associated with these two words, so definitely verge is also the right answer. So we have got all these options as correct, and D becomes the final answer. Academy is a dash forefront of providing quality education. The, no article, a, or none of these. Now remember, whenever at comes, so after at you have to look at the word. If it is a common noun or if it is an adjective. If after at these two words come, you have to look at their syllables. You have to look at their syllables. Syllable is a vowel or a vowel-like sound, right? So if you look at the syllable and the word has only one syllable, so you don't need to use the before it. But if the word has more than one syllable, it has two or more syllable, then you have to use the before it, right? Now if you look at the word forefront, so forefront has two syllable, right? So after at, when there is a word which has two syllable and it is either a common noun or an adjective, so you have to use the before it, right? So the right option is A. Academy is the forefront of providing quality education. They waited by dash Nile river. Remember, with name of the rivers, name of the mountains, name of any specific thing, you have to use the. So C is the right answer. Choose the correct sentence. Iqbal and Ghalib's poetry. Remember, we are dealing here with apostrophe. So, whenever two people
own one thing, so we use apostrophe S with the second name, right? Now here, Iqbal and Ghalib's. So we have used apostrophe S with the second name. Here it is used with the first name, which is not right. Here again it is used with the second name. So it means that the problem is not with the apostrophe, the problem is somewhere else. Right, okay. Poetry are and poetry is. Okay. When and refer to one thing, it has to follow is. Like it will use a singular verb. Whenever and joins two things for one thing, poetry, so it has to be considered as singular. So Iqbal and Ghalib's poetry are is not the right answer. Iqbal and Ghalib's poetry is the right answer. David is standing, there's Lisa, Peter and Carol. Now we have got among, between and after. Remember, we use among when there are two plus things, but they are mentioned as a group. And we use between when there are two or more things, but they are mentioned separately. Does it make sense? And we use after when something is moving on back of something, right? So here David is standing, David is not moving, so after cannot be the possible answer. Now we have got among and between. We have got 1, 2 and 3 people, so they are 2 plus. Now let us see whether they are mentioned as group or they are mentioned separately. So they are mentioned separately, so the right answer is B. And the last, David, go there. Now again follow the formula, patak. Preposition, adjective, time, adverb and place. Go is a verb. After verb, it is there. There is adverb. So when adverb comes after verb, you cannot change that into passive. So the right option is none of these. Thank you very much. Have a lovely time.